relevant चीज तो जी 42 पर last 3 lines. This is my view. यहाँ से पढ़ना चाह रहे In हैं. my view, that judges do not have a crystal ball to look into the future. We must determine a matter in the circumstances submitted before us and leave to the history to judge whether correct decision was taken. See, You see, what does this mean? ऐसी ये relevant बातें बताएं ना please. आगे आ जाइए जी. ये मैं आता हूँ जी. Next page. 46 पेज पे आपने कुछ मार्किंग की हुई है. 186 है इसका टाइप पेज. ये देखें यहाँ पेज जिसे पेज 56. The proposal, may I read? Sixth line. This is 6th line from the top. Page 56 of my rejoinder. Page. This is page. ये किताब का पेज. उसकी जॉब है. इसने कहा कि मन से की तो इंसान है, कमजोर है, 53 पे. Mr. Kasuri, if you have, don't please stand here and look for the page. आप आराम से बैठिए. If the relevant page is, just tell us. Otherwise, we'll waste a lot of time just looking for what you want to read. आप आराम से बैठिए and let us know what page you want us to read. I'll read the relevant portion, sir. I don't want you to read the whole book. Just tell us what particular paragraph, page you want to read. मैं वही बता रहा हूँ जी. बताइए जी. तो ये है अपना पेज 52 ऑफ माय पेपर बुक. जी पढ़िए. कहाँ से पढ़ना चाह रहे हैं? ये है 1 2 3 8th line from the bottom, 8th or 9th line. पढ़िए. I told Justice Dura Patel that finding Mr. Bhutto not guilty was not consistent with the thinking of the four Punjab judges, since all of them had come to the conclusion that the evidence in the High Court of the officials of the Federal Security Force who had participated in the killing proved their guilt. And these officials had no motive of their own against Ahmad Raza Kasuri. Undoubtedly, it was only the wish of Bhutto which they had carried out. See, what do you want to show from this? How does this language come undoubtedly? It could be the wish of 101 other persons also. So what do you want to show us from it? I'm coming, sir. Gradually, see, let's उस ज़ुबानी बता दें क्या कहना क्या चाहते हैं. ये है जी अपनी पेज 53. Page 53. Last from the bottom 9th line. While the majority judgment was written in the name of Inal Haq CJ, in fact it was collective effort of all the four judges who had found Mr. Bhutto to be guilty. Chief Justice had assigned various issues in the case for being dealt with by his colleague, and we had written our
portions of the judgment and delivered it to the Chief Justice. The majority judges was therefore a collective effort wherein Chief Justice had merged all the portions into one consistent whole after appropriate vetting. اب انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس نے ہمیں نو انگلش لینگویج یو ڈونٹ ہیو ٹو ٹرانسلیٹ اٹ ہمیں بانٹ دیا ہم نے وی انڈرسٹینڈ دی انگلش پوزیشن از کہ اگر اس کو پریشر تھے ہی شوڈ ہیو ریکیوزڈ ہمسیلف ڈونٹ گیو اس دیٹ ایڈوائس that is relevant. پوزیشن یہاں یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ this helps you or doesn't help you. It's a very longest case. انہوں نے 4 پورشنز میں دے دیا اور ہم سب نے اپنے اپنے ججمنٹ لکھے اور اس کو چیف جسٹس نے ان کو کنسولیڈیٹ کر دیا اسی. That's what he's saying. پھر کیا ہوگا So he's a party to it. ٹھیک ہے He's a party to it. That is recorded in the judgment itself. He's a party to it. He's a party to it. So therefore, Mr. Kasuri, make the point, please. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ سر if at all there was any pressure he should recuse himself. We've noted that point. Then there's another argument. Who is the author judge in this? That is the Chief Justice of Pakistan. Now if he had decided on pressure, that means that he served General Zia and taken the throne from his side. Now what history tells us? Are you going to make the point or not? My point was, history tells us that after few months later, PCO was promulgated and Chief Justice refused to take oath. A judge who refused to take oath and go on a premature retirement, do you think on the instructions of or on the pressure of somebody he will go and pass a judgment of death? That's the point. Now can we continue? آپ تشریف رکھیں. This is not your reference, this is the presidential reference. So you don't have a right of audience to begin with. You will be heard at your appropriate time. So اگر آپ ہر دفعہ میں interrupt کریں گے تو ہم please ذرا ٹھہر جائیے. This is not a case. This is not an adversarial proceedings. جواب دیا اس کی بھی کاپی مجھے دینی چاہیے. I should be provided with the copy which Mr. Bilawal Bhutto has placed before this court. Yes, it's been filed. دے دیجیے ان کو سیٹ اگر نہیں ہے ایکسٹرا آپ کے پاس پڑا ہوا ہے. آپ یہ کام ان سے کہیے نا, ہم سے تو نہ کہیے, ہم سے آفس کا کام نہ کروائیں. اگر کوئی مسئلہ ہو رہا ہے نہیں مل رہی پھر ہمیں بتا دیں, ہم آپ کو دلوا دیں گے. اچھا وہ ہو گئی جگہ, ہاں چلیں لگائیں. This is not the same book. These are 3 different books. You can give on a page. اس میں نہیں وہ memoirs ہے. لیکن that paragraph page 53 is a relevant paragraph. Which is collective. SB پہ چلے گا. معلومات کیجیے کہ مسئلہ ہے تو بعد میں کر لیتے ہیں. چلیں وہ کون تھے ادھر, ہاں چل گیا صاحبان کیا کریں آپ کی ایک آبزرویشن. جی ہاں, یہ میرے خیال میں بالکل حقیقت پہ مبنی ہے. کسو کتاب ہے یہ آپ کے ریویوز کے بارے میں ضرورت کا پیکر. آپ نے کہا کوئی آ جاتا ہے کہ جناب ماشاء اللہ غیر قانونی ہے, انہوں نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے, آئین کو توڑ دیا ہے, لہذا آپ ماشاء اللہ کو غیر قانونی قرار دیں اور انہوں نے جو کارروائی کی ہے اس کی انہیں سزا دیں. جج صاحبان بیٹھے ہیں اوپر ماشاء اللہ والے توپیں بندوقیں لے کے کھڑے ہیں, تو پھر جج صاحبان کیا کریں آپ کی ایک آبزرویشن. جی ہاں, یہ میرے خیال میں بالکل حقیقت پہ مبنی ہے کہ لوگوں کا تو خیال ہے نا کہ ججز کو تلواریں چلانی چاہیے اور ملٹری والوں کو یعنی نیست و نابود کر دینا چاہیے, انہوں نے غلط کیا ہے. مگر وہ ملٹری والے ہیں وہ ججوں کو نکال سکتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ لوگ بالکل کچھ کرتے نہیں,
जब तक पब्लिक ओपिनियन ना हो वो कोई भी कोर्ट या कोई भी अदारा अपने तो सर मैं पूरा तरह आराम से एक बात कहना चाहूँगा कि जज पर ये लाजम नहीं कि जज इंसाफ करे। लाजम तो है मगर कई दफा अपनी जब यानी नौकरी का मसला आता है तो तमाम जज साहबान जो है वो इसलिए बहादुर नहीं होते कि अपनी नौकरियों को कुर्बान कर दे और इंसाफ करते रहे। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, लिहाजा वो यही समझते हैं कि अपनी नौकरी को बचा लेना चाहिए क्योंकि शायद मेरा यहाँ रहना कौम के लिए और इस अदारे के लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर मैंने निकाल दिया और मेरी जगह कोई नत्थू ऐसे कोई आ गया तो वो जो भी फौजी कहेंगे वो करता रहेगा। तो लिहाजा बेहतर है कि एक आध केस में जिसमें फौज ज्यादा इंटरेस्टेड है उसमें कोई थोड़ा सी लचक दिखा दी जाए मगर यानी अपनी सीट बचा ली। तहरीर किया या जी ये बस आपने तो ये दिया है। पोर्शन आपने ये तो नहीं गलत वाला बताया मैं। अच्छा ये जो इंटरव्यू दिया तमाम जज साहबान जो हैं वो इसलिए बहादुर नहीं होते कि अपनी नौकरियों को कुर्बान कर दे और इंसाफ करते हैं। का जो पोर्शन मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, लिहाजा वो यही समझते हैं कि अपनी नौकरी को बचा लेना चाहिए क्योंकि शायद मेरा यहाँ रहना कौम के लिए और इस अदारे के लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर मैंने निकाल दिया और मेरी जगह कोई नत्थू ऐसे कोई आ गया तो वो जो भी फौजी कहेंगे वो करता रहेगा। तो लिहाजा बेहतर है कि एक आध केस में जिसमें फौज ज्यादा इंटरेस्टेड है उसमें तो थोड़ा सी लचक दिखा दी जाए मगर यानी अपनी सीट बचा ली। जुल्फिकार अली भुट्टो केस में मौजूद थे जी। आपसे अगर ये पूछा गया जाए कि क्या पाकिस्तान की अदालती तारीख में ऐसी कोई मिसाल है कि महज मशवरे की बुनियाद पर किसी को फांसी दी गई है? जी हाँ, मेरे ख्याल में ये मशवरा तो नहीं था, उसमें तो वो था कि उनका ऑर्डर था कि वो यानी अपने यानी सबॉर्डिनेट्स को इसको रजा कसूरी को खत्म कर दिया जाए। तो लिहाजा मशवरे की और बात होती है, ऑर्डर की और बात। तो सब ये जो जब मैं अगर मैं मुजरिम हूँ, मैं एक्यूज हूँ, मैं कहूँ कि मुझे आप पर एतबार नहीं है, मुझे आपसे इंसाफ की तवक्को नहीं है, तो आपको बतौर जज क्या करना चाहिए? ये डिपेंड करेगा ना कि क्या आप देखते हैं वजूहात। मुल्क का वजीर आजम हूँ, आपके सामने पेश हूँ, मैंने आपको प्रमोशन नहीं दी, आपको बिठा दिया गया, मैं कहता हूँ मुझे आपसे इंसाफ की तवक्को नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए था? तो मैंने नहीं ख्याल किसी को उन्होंने कहा ऐसी बात कि आप मुझे तवक्को नहीं, बल्कि उन्होंने तो बड़ा हमेशा कहा है कि मुझे सुप्रीम कोर्ट पे पूरी। मौलवी मुश्ताक साहब की मैं बात कर रहा हूँ, मौलवी मुश्ताक साहब को जुल्फिकार अली भुट्टो ने ये कहा। जी हाँ, वो मेरे ख्याल में मौलवी साहब की रियासती। That's it. You've not even given the correct recording. Said There is more. It was removed from the YouTube. नहीं, please show us. ऐसे तो ना करें because this is not even relevant. The one portion, I don't know if it's correct or not. अब हम फिर हम अपने तौर पे सुन लेंगे. Let's continue with Mr. मखदूम अली खान. है इसके आगे काफी है जो भी। Yes sir, देखें वो जो है ना, मैं आप सर्च करूँ ना जो। The question of pressure is a portion which you've not produced in it. मैं अर्ज करूँ ना ये जो। अर्ज क्या करना है ना, factually आप हमें वो गलत चीज दे रहे हैं। नहीं सर, देखें जो YouTube पर जो मेन इंटरव्यू था वो रिमूव कर दिया गया था, हमारे पास अब उसकी कॉपी नहीं है। What we could get, we have given. Geo has sent the whole copy. सर हमें कॉपी नहीं मिली है ना सर, प्लीज। अच्छा ऐसा करें, आप ऐसा करें कि नहीं, एक सेकंड ठहर जाइए, ये जो जियो वाली कॉपी है इसकी कॉपी बना लें 2-4, ये जो आई है जियो से, ठीक है। और फिर हमें ये अभी 1 घंटा तो हमारे पास नहीं है सारे को सुने, जो रेलिवेंट पोर्शन है आप हमें ये बता देंगे 10 मिनट पे, 20 मिनट पे, जो भी मिनट पे, वो हम नेक्स्ट डेट पे कर लेंगे, नेक्स्ट डेट पे कर लेंगे। आज आप ले जाइएगा, प्लीज हियर इट केयरफुली एंड गिव अस एग्जैक्ट टाइम लाइन। नेक्स्ट आइए मखदूम साहब। दैट विल बी डन सर, थैंक यू जी।
Lord, may I, with your Lordship's leave, begin with the questions. I have noted the questions at that time. My Lord, Mr. Sayyid Mansoor Ali Shah asked the first question, what is the window available to us in this case? My respectful submission would be that the window is the window of the principle of nemo iudex, that whether the acted in accordance with the due process of law or were there any external pressures. When your Lordship sees that interview, whether that window is open or not will become apparent. My respectful submission. Other than the interview, you don't have to say anything else? My Lord, yes. The other is, your Lordship said what can be fixed, my Lord the Chief Justice. Your Lordship said the sentence has been executed, and your Lordship said what is to be fixed. My Lord, your Lordship is right, that cannot be fixed. But what can be fixed, as your Lordship identified for the purpose of posterity and history, is the precedent of this Honorable Court, the jurisprudence of this Honorable Court, and, of course, the reputational damage. जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी को अदालती कत्ल करार देने के सदालती रेफरेंस पर समाअत। अदालती मुआविन